Hello dear students, welcome to UBA first year English literature class. Today I am going to discuss your first paper poetry. In today's session I am going to discuss Spenserian stanza. स्पेंसरियन स्टेंजा से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में और भी कुछ बता दूंगी. ये स्पेंसर एडवर्ड स्पेंसर ने इसको इन्वेंट किया है. इसके साथ ही इनसे रिलेटेड जो भी उस समय का पीरियड चल रहा होगा मैं उसके बारे में भी आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूंगी, समराइज कर दूंगी उस समय. और गोल्डन एज चल रही थी, गोल्डन एज उसको क्यों कहा जाता है ये भी बता दूंगी, विच फीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. और इसके बाद आपको स्पेंसर का जो भी क्रिएटिव वर्क है उसके बारे में मैं पूरे डिटेल्स में बताऊँगी. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास. करने से पहले हम इस समय के जो पॉइंट्स हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं. इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन एज. क्वीन एलिजाबेथ रूल्ड शेक्सपियरियन एज, मॉडर्न इंग्लिश, पीरियड ऑफ रेनेसां एंड गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. द गोल्डन एज फ्रॉम 1558 टू 1603. एट दिस टाइम मोनार्क किसका था? मोनार्क सबसे पहले थे आपके यहाँ पे इस समय एलिजाबेथ फर्स्ट, द फर्स्ट फीमेल इंग्लिश मोनार्क, 1558 to 1603. So why was the golden age so golden? एलिजाबेथ एज को इतना ये गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? viewed so highly because of the period before and after. A brief period of largely internal peace between the English Reformation and the battle between Protestant and Catholics and the battles between the Parliament and monarchy that engulfed the 17th century. Protestant-Catholic divide was settled for a time by the Elizabethan religious settlement. The height of English Renaissance, the flowering of poetry, music and literature. The era is most famous for theatre as William Shakespeare and many others composed plays that broke free of England's past style of theatre. These events are responsible for this period is calling golden age, an age of exploration and learning about the world around England, an age of colonizing and economic growth. The centralized, well-organized and effective government was in place largely thanks to Elizabeth's father Henry VIII. All in all, England is looking pretty darn good. Prime time for a young talented poet like Edmund Spenser to make his work supported by a queen who delighted in the arts and fostered a flourish of artistic growth. Now I would like to talk about Edmund Spenser. पीरियड इनका है 1550 टू 1599. Known as the poet's poet for his delight in the pure artistry of his craft, periodical imagery, sensuous description and linguistic richness. John Milton, John Dryden, John Keats and Wordsworth all refer to him in their own words praising his style. Born to a tailor, London, England, received a progressive education. As a gentleman by education only, he needed a work to support himself, worked as secretly to a bishop and an earl, which brought him into proximity of the court of Queen Elizabeth. The court was the center of social life and status in England. While Spenser was friends with many established countries, he was never part of the court himself, partly because he was transferred to Ireland. In 1590, his friend Sir Walter Raleigh, famous English poet, helped him publish The Fairy Queen. In 1594, married Elizabeth Boyle. Their love is immortalized in his famous sonnet sequence, The Ambroti.
शॉर्ट में ग्लिम्स देखते हैं हम एडमंड स्पेंसर की 1552 से 1599 तक. बॉर्न इन ईस्ट स्मिथफील्ड लंदन टू जॉन स्पेंसर अ क्लॉथ मेकर, एजुकेटेड एट मर्चेंट टेलर्स स्कूल एंड पेम्ब्रोक हॉल कॉलेज कैम्ब्रिज. Now I am going to focus on the Spenserian stanza and Spenserian sonnet. The Spenserian sonnet was invented by the famous 16th century poet Edmund Spenser. Spenser was born in either 1552 or 1553 in London, England. Today he is best known for his epic allegorical poem The Fairy Queen. This complex, engaging and the sometimes strange poem is a celebration of the Tudor dynasty generally and Elizabeth I especially. It was meant to be 12 long, although Spenser only managed to publish 6 during his lifetime. The story follows knights that represent different virtues. This poem is considered to be one of the best ever written in English language, and Spenser ranks among the best poets of all time. स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेंसरियन सोनेट देखिए थे. अब देखते हैं स्पेंसरियन सोनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है. Although Spenser is best known for the Fairy Queen, he also wrote numerous sonnets, pioneering a new form that is now synonymous with his name. The sonnets are 14 lines long, as are all traditional sonnets, and are contained within a single block of text. The poems contain 3 quatrains, as do Shakespearean sonnet, and one final couplet. They follow a rhythm scheme of A B A B B C B C C D C D E E. This pattern is comparable to a Shakespearean sonnet and a Petrarchan sonnet, although there is a distinct difference in the repetition of the C rhythm, C rhyme. The couplets that make up this entire form are its most prominent feature. Spenserian stanza poetic form. Spenserian stanza verse form that consists of 8 iambic pentameter lines followed by a 9th line of 6 iambic feet. An Alexandrine. The rhyme scheme is A B A B B C B C C. The first 8 lines produce an effect of formal unity, while the hexameter completes the thought of the stanza. देखिए आपका कहने का मतलब ये है, जो आपकी इसमें 9 लाइन का ये जो स्टैंजा होता है ये हमारा क्या कहलाता है, स्पेंसरियन स्टैंजा कहलाता है. 9 लाइन की 8 लाइन जो होती हैं आपकी वो होती है आइम्बिक पेंटामीटर में. देखिए आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट इन द प्रीवियस क्लास. आइम्बिक पेंटामीटर फिर भी हम बता देते हैं. 5 फीट जो होते हैं वो हमारे आइम्बिक पेंटामीटर कहलाते हैं. अब आप बोलेंगे फिट क्या होते हैं. देखिए आइम्बिक क्या होता है, जो आपका अनस्ट्रेस्ड लेवल जब फॉलोड किया जाता है आपके स्ट्रेस लेवल से तो वो हमारा आइम्बिक कहलाता है. और पेंटामीटर क्या होता है, जो इसमें 5 पेयर बनते हैं, मतलब एक जोड़े को हम एक फीट कहते हैं या फुट कहते हैं या आयम कहते हैं. ओके, जो ये बनते हैं उनको हम लोग आइम्बिक पेंटामीटर कहते हैं. इसी तरह से ये जब 5 की जगह 6 पेयर बन जाते हैं तो उसको हम हेक्सामीटर कहते हैं. ओके, इनकी जो 9th लाइन थी उसमें हम हेक्सामीटर का यूज़ देखते हैं. इन्वेंटेड बाय एडमंड स्पेंसर फॉर हिज पोएम द फेयरी क्वीन 1590 to 1609. The Spenserian stanza has origins in the old French ballad, 8-line stanzas rhyming. हमने आपको ऑलरेडी बता दिए A B A B B C B C. The Italian Ottava rhyme, 8 iambic pentameter lines with a rhyme scheme of A B A B A B C C, and the stanza form used by Chaucer in his Monk's Tale, 8 lines rhyming A B A B B C B C.
चलिए हम इनके थोड़े से आपको एग्जाम्पल देकर दिखा देते हैं। आपका एग्जाम्पल ऑफ द स्पेंसरियन सोनेट का पहले एग्जाम्पल हम दे देते हैं। एग्जाम्पल इनका जो फर्स्ट एग्जाम्पल सोनेट नंबर 75 है। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड बाई एडमंड स्पेंसर। ये जो इनका एम्ब्रॉयडरी जो कलेक्शन ऑफ द सोनेट्स है उसमें इन्होंने लिखा हुआ, उसमें हम बताते हैं आपको। दिस स्पेंसरियन सोनेट इज़ वन ऑफ द सेवरल दैट आर इंक्लूडेड in एम्ब्रॉयडरी, a series of sonnets that are focused on Spenser's relationship and marriage to Elizabeth Boyle. एलिजाबेथ बॉयल के साथ जो इनकी मैरिज हुई उसके रिलेशनशिप पर ये सोनेट डिपेंड करता है। द वॉल्यूम वाज पब्लिश्ड इन 1595 एंड इंक्लूड्स इन टोटल 89 sonnets and a series of shorter poems known as Anarchionics and Epithalamion. Sonnet 75 is one of the most popular sonnet in this series. In it, Spenser uses lyrical language to create a conversation between the speaker and his lover. In the lines, he addresses his lover, telling her that because of the nature of their love, it will live on forever. The first lines make use of a memorable image of the speaker writing his beloved's name in the sand of a beach, as one might expect. The tide comes up and washes the name away. He tries multiple times until his lover tells him to stop. There is no way to make a mortal thing immortal. Take a look at the third quatrain that carries his response. ये इनका जो है वो मैं दिखा रही हूँ। Not so quoth I, let baser things devise, to die in dust, but you shall live by fame. My words your virtues rare shall entrise, and in the heavens write your glorious names. देखिए राइम इसकी, फेम नेम मैच कर रही है, डिवाइस एंड ट्राइज। देखिए इन्होंने कोटेशन में क्या बताया हुआ है। ही रिप्लाइज टेलिंग हर दैट morality is not for her. She is not one of the baser things that going to die in dust. She shall live by fame. This is the theme that was used by Shakespeare within his fair youth sonnets. The speaker believes that his lover will live forever because they are immortalized in his writing. Now focus on example 2, sonnets number 54 of this verse theatre in which we stay by Edmund Spenser. This is another popular poem from embroidery. In it, Spenser uses the theatre as a way of describing himself as a lover. The speaker is an actor in these lines, playing out different roles for his uninterested beloved. This poem also follows the pattern of the standard Spenserian sonnet and iambic pentameter. Here are the first 4 lines of the poem. ये फर्स्ट 4 लाइन्स हैं पोएम की। देखिए, of these words theatre in which we stay, my love like the spectator idly sit, beholding me that all the pregnant play, disguising diversely my troubled wits. In these lines, Spenser tried to express that a reader can find A.B. rhyme scheme and the use of iambic pentameter as a standard metrical pattern
They also set up a metaphor that compares the world to a stage, as in As You Like It by William Shakespeare. And the lover is spectator. She sits idly watching the speaker. He tries to act gladly and sorrowfully, anything to get his lover's attention, but she does not seem to care. In the final lines, the speaker suggests that she is a senseless stone. The poem ends unhappily with the speaker discouraged. ओके, आई होप आप लोगों को ये जो मैंने बताया था स्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में, ये स्पेंसर हमारे किस पीरियड के थे, उस पीरियड से रिलेटेड मैंने जो गोल्डन एज थी, गोल्डन एज से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे मैंने उनको डिस्क्राइब कर दिया था शॉर्ट में. इसके बाद मैंने एडमंड स्पेंसर के बारे में डिस्क्राइब कर दिया. इसके बाद मैंने स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है, उसका मीटर क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फॉर्म कैसा है, ये सारे ही पॉइंट्स मैंने इस क्लास में, इस लेक्चर में डिस्कस कर दिए. आफ्टर इट मैंने उनके 2 पोएम्स के आपको इसमें एग्जाम्पल भी दे दिए. ओके, आई होप you get a lot of information related to this topic that what is the Spencerian stanza. और स्पेंसर से रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें पता चल गई होंगी. अगर ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है या फिर वैसा बनता है तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे इस क्लास, इस लेक्चर के थ्रू. ओके, हैव अ नाइस डे.